A very pleasant morning to all my dear children, and welcome to DSEJ online classes, an initiative by Directorate of School Education, Jammu. I am Geeta Bharti, teacher from district Rajouri. Dear children, once again I am in front of you with another and interesting topic, and this topic is for class 7th, subject English. And children, today we are going to discuss how to write an essay on water conservation. Clear? How to write an essay on water conservation. Dear children, I am sure after discussing this topic, we shall be in a position to understand how to write an essay on any topic. And moreover, we should be able to understand that water is really important for us and how can we conserve it, how can we save it. Okay? Before proceeding towards our topic, let's discuss the main points which we should keep in mind while writing on any topic. Clear? Children, firstly, you should know the meaning of the title. आप कोई भी चीज़ लिखने जा रहे हैं, उसका टाइटल, उस टॉपिक का नाम क्या है, सबसे पहले आपको उसकी समझ होनी चाहिए. After that, you can write accordingly. Okay? Next बात जो आपने ध्यान रखनी है that the content should be written in a proper sequence. Means जो भी आप लिखेंगे that should be in a proper sequence. ये नहीं कि जहाँ से मन किया, जहाँ से आपको याद आ गया वो पॉइंट आपने लिख लिया. No, and the writing should be error free. आप जो भी लिखें उनकी स्पेलिंग्स चेक करके लिखें. Grammatically it should be correct. अगर आपको नहीं मालूम, you can take the help of your teacher, your elder sisters and brothers. Okay? लेकिन गलत राइटिंग आपने कभी भी नहीं करनी. Clear? Children, I have told you that our today's topic is how to write an essay on water conservation. आज का हमारा टॉपिक है, हमने एक ऐसे लिखना है जिसका नाम है वाटर कंजर्वेशन. पानी को किस तरह से बचाएं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज एन essay. ऐसे है क्या. मेनी टाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि ऐसे लिखना है या पैराग्राफ है. हम कई बार पैराग्राफ को भी ऐसे समझ लेते हैं कि जो एक ही 10-12 लाइंस लिखी हुई हैं और एक पैराग्राफ में लिखा है तो हम उसे भी ऐसे मानते हैं कि ये छोटा ऐसे है. बट नो, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एन essay एंड अ पैराग्राफ. सो फर्स्ट, व्हाट इज अ पैराग्राफ? A paragraph is the fundamental unit of an essay and it focuses on only one topic. Clear? A paragraph consists of several sentences that are grouped together. Means paragraph में हम टॉपिक के एक ही पॉइंट को, जो मेन पॉइंट होता है, उसी को डिस्कस करते हैं और उसी के बारे में हम लिखते हैं. और पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया. Whereas an essay is a piece of writing which is usually composed of several paragraphs. ठीक है? And can focus on a much larger topic than an individual paragraph can. अगर मैं इसको आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो ऐसे क्या है, ऐसे एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं. बहुत सारे मीन्स कि उसमें 3 or 4 मेन पैराग्राफ्स होते हैं उसमें. और अगर हम ऐसे लंबा लिखना चाहते हैं या उनके वर्ड्स को एक्सीड करना चाहते हैं तो वो उस
पैराग्राफ से ऊपर भी जा सकता है। ओके, और ऐसे के अंदर हम हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सो पैराग्राफ एंड एसेज डिफर इन देयर लेंथ, सो नेवर कंफ्यूज while writing an essay. Okay? Now I think you understand the difference between a paragraph and an essay. Let's move towards our today's topic, how to write an essay on water conservation. And for this, let's discuss the steps of an essay writing. You have to remember, आपको याद रखना है कि ऐसे लिखते समय we have to follow some steps. The main parts to an essay are the introduction, then body and conclusion. जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे को सीक्वेंस में लिखें। और एक ऐसे की सीक्वेंस क्या है, हमारे पास कोई भी टॉपिक आता है, when we are going to write an essay, we should keep in mind, firstly हमने उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। देन बॉडी, बॉडी मीन्स जो मेन कंटेंट आता है वो उस पार्ट में आएगा। एंड आफ्टर कंटेंट वी हैव टू राइट द कंक्लूजन, मीन्स कंटेंट में हमें हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर हमें लास्ट में उसको कंक्लूड करना है, मीन्स उसका कंक्लूजन लिखना है। ओके, अब सबसे पहले है इंट्रोडक्शन पार्ट। प्लीज लिसन केयरफुली। While writing introduction, one should keep in mind that introduction attract the reader's attention, and we can begin this introduction with some important quotations, and we should keep it short and focused and introduce only main points. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट और बट इट शुड बी अट्रैक्टिव, अच्छी सी होनी चाहिए। कोई कोटेशन लेके हम शुरू कर सकते हैं, टॉपिक के बारे में हम पहले पूरा जान लें, उसके मीनिंग को समझें, फिर उसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ में हमें इंट्रोडक्शन देनी है। सो इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर इंट्रोडक्शन कम्स बॉडी, मीन्स content of the topic, and it covers all aspects of the topic. Actually, the body of the essay provides details for the points in your introductory paragraph, and you can provide information of the topic in detail in 3 or 4 paragraphs or more than these. And whatever you are going to write, please explain it with proper quotes, examples and statistics. Okay? जो सेकेंड पार्ट है ऐसे का, जो सेकेंड स्टेप है जिसे मैंने बॉडी का नाम दिया, बॉडी ऑफ द एसे, इसमें हम जो मेन पार्ट है, कंटेंट जो है एसे के बारे में वो लिखते हैं। इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पार्ट में हम टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? एंड आफ्टर बॉडी द लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। द कंक्लूजन समराइजेस द एसे एंड गिव्स द रीडर क्लोजर्स। कंक्लूजन हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम अपने एसे को एंड कर सकें। जो भी हमने डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन लिखी, उसके बाद बॉडी के पार्ट्स में वॉट एवर वी डिस्कस, वी हैव टू कंक्लूड। उन्हीं पॉइंट्स को लेके जो राइटर है बाद में मेन पॉइंट्स को कंक्लूड करेगा, उसका कंक्लूजन लिखेगा। सो रिमेंबर देयर आर मेन 3 स्टेप्स। ओके, कितने स्टेप्स हैं हमारे पास ऐसे लिखने के? 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज बॉडी ऑफ द एसे, देन कंक्लूजन। और कई बार हम देखते हैं कि 5 स्टेप्स लिखे जाते हैं। तो 5 स्टेप्स में क्या होता है कि फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है, आफ्टर दैट बॉडी।
और बॉडी के अंदर जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वो डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द एसे। अगर हम एसे की लेंथ को एक्सीड करना चाहते हैं, ज़्यादा वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, तो वो 5 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। बट अगर हमें शॉर्ट एसे लिखना है तो हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, देयर आर मेन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। ओके, so this is the way we write our essay. Now let's move our today's topic, that is essay on water conservation, right? तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, सो let's write introduction. Water is life and life is water. Without one, the other cannot exist. It is the basis of life on earth, but we don't realize its real value. And in order to prevent water scarcity, water conservation is only the remedy. Clear? We all know that water is the basic necessity of life. पानी के बिना हमारी जो ज़िंदगी है वो नरक के समान है। हम 1 मिनट के लिए भी पानी के बिना अपनी लाइफ को नहीं सोच सकते, और पानी को सेव करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इट्स आवर ड्यूटी टू सेव वाटर। सो वाटर कंजर्वेशन refers to the preservation, control and development of water resources, both surface and groundwater, and prevention of water pollution. So water conservation से हम क्या समझते हैं? वाटर को सेव करना, उसे प्रिजर्व करके रखना, और उनके जो रिसोर्सेज हैं लाइक रिवर, लेक्स, है ना, उनको बचा कर रखना, उन रिसोर्सेज को और डेवलप करना, अंडरग्राउंड वाटर के भी और जो बाहर है उनको भी, और किस तरह से हम पानी को पल्यूट होने से बचाएं, प्रदूषित होने से बचाएं। दिस इज आवर मेन मोटो। एंड नो डाउट वाटर इज वन ऑफ द यूनिक थिंग्स फाउंड इन द विजिबल यूनिवर्स अदर देन प्लैनेट अर्थ। इट इज फाउंड इन आवर अर्थ। Alas, still we use it carelessly. हम अभी भी इसे बर्बाद किए जा रहे हैं। Now, what is the need for water conservation? Why we conserve water? One should know why our earth is described as a blue planet. It is because larger than 70% of the earth's exterior is covered with water. But do you even aware of how much of this volume of water is really used for us? सब कहते हैं कि हमारी ज़मीन का जो 70% हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। तो फिर हमारे मन में आता है कि अगर 70% वाटर है हमारे पास, 30% अर्थ है, तो हम क्यों घबराते हैं कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। नो डाउट द अर्थ हैज़ एन abundance of water, but sadly only a miniature percentage. You want to know? About 0.3% is suitable for humans, and the other 99.7% is in the oceans, ice caps, soils, and captured in the environment. And still enough of the 0.3% that is out of reach. तो आप सरप्राइज हुए ना कि ओनली 0.3% ऑफ द वाटर जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, और जो बाकी पानी है उसे हम यूज नहीं कर सकते। सो इट्स आवर प्राइम ड्यूटी, ये हमारी प्राइम ड्यूटी बन जाती है कि हम वाटर को सेव करके रखें। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू सेव वाटर। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं? वी कैन कंजर्व वाटर by practicing some useful methods. And you want to know? Okay, let's discuss.
While brushing your teeth, keep the tap closed. Prefer using a bathtub in place of a shower. Remember, ब्रश करते हुए टैप को खुला नहीं छोड़ना. नहाने के लिए बकेट में पानी को यूज़ करना है. Then use a watering pot to water the plants. Use buckets to clean lawns. Close the shower when applying soap. कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना ये, लेकिन इससे हमारा बहुत पानी सेव हो सकता है. बड़े बड़े बरामदे धोने के लिए हम बहुत सारी बकेट्स पानी फेंक देते हैं. बट इफ़ वी यूज़ जडिशली, बहुत अच्छी तरह से अगर हम पानी को यूज़ करेंगे तो हम उसे सेव कर सकते हैं. यूज़ अ स्पॉन्ज टू क्लीन योर कार. क्लोज द टैप after drinking water, and teach our friends, our sisters and brothers not to play with water too much, and take only the required amount of water in the glass to drink. Mostly what we do, जब हम बाहर से आते हैं, हमें प्यास लगी होती है गर्मी में, तो हम पानी के लिए बोलते हैं हमें पानी दीजिए. पूरा गिलास पानी भर के ले लेते हैं और फिर फ़ैन के नीचे बैठ के वी फील कूल, और फिर आधा गिलास में पानी पी के बाकी का हम थ्रो कर देते हैं. दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर. हमें ऐसे ही पानी को सेव करना है. और आपको पता है, बाहर के देशों में हाफ ग्लास ऑफ वाटर को लेकर अभियान चलाए गए कि हमें आधा गिलास पानी भी वेस्ट नहीं करना है. एंड आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू. राजस्थान के अंदर आप सब जानते हैं कि देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पर वहाँ के लोग उसे बहुत जुडिशली यूज़ करते हैं. वो आपको पानी गिलास में ना दे के वो पानी को लोटे में देते हैं, ताकि जितना भी पानी आप पीना चाहें ऊपर से पी लीजिए, ताकि जो बाकी बच जाता है पानी वो सेव हो जाए, वो हमें जूठा करके फेंकने की ज़रूरत ना पड़े. तो दिस इज़ वन ऑफ द वे वी कैन सेव आवर वाटर. द अदर वेज to save our water is to check regularly our taps for the leaks, and we should fix them properly. Then rainwater harvesting is a water conservation technique to save water. I think आप जानते भी होंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिससे हम बारिश के पानी को सेव करके रख सकते हैं. जब भी बरसात के दिन होते हैं, हम ड्रम्स के अंदर या फिर पाइप्स के थ्रू, अगर हम छतों के पानी जो हैं वो पाइप्स को ग्राउंड वाटर में शिफ्ट कर दें, तो पानी को हम अपने ग्राउंड में या फिर बड़े बड़े टैंक्स में सेव करके रख सकते हैं. दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. And one of the most important steps to save water is water used for washing vegetables and fruits should be used in watering the plants. Means हम जो भी vegetables या fruits को धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसे यूं बाहर ना फेंक कर पौधों में दे सकते हैं. So these are some important steps we can follow to save our water. And if we want to exist in our planet, we should save water, and we have to sensitize other people, because we can't imagine a day without water. We don't have a life without water. Water is not only a demand for our survival, but it is also needed for achieving a healthy life as well. Imagine a day without water. आप सुबह उठते हो और आप अपने वॉशरूम में जाते हो, and there is no water. कैसा लगेगा आप सबको? What do you exactly feel at that time? I am sure आप उस समय helpless feel करोगे. So water is very important for our life, and it's our prime duty to save or conserve water. Each one knows the condition of water deprived nations like Africa,
where residents are living a distressed life. Now, it is time for everybody to awake and understand the importance of conserving water. It's not my duty, not only your duty. It's everyone's duty to save the water. In short, a world without water will make humans impossible to last. The same can be assumed for animals and plants. In fact, the entire earth will experience suffering without water. Further, aquatic animals will go extinct after they losing their shelter homes. And with time, the colorful earth will convert into colorless earth. तो वो टाइम दूर नहीं है जब ये हमारी हरी भरी धरती, ये हमारे लहलहाते हुए खेत, पक्षियों की चहचहा और बहुत सारे जीव जंतु जो हैं पानी के अभाव के कारण ये पृथ्वी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे. हमारे आने वाली जनरेशन्स को पानी के बिना रहना पड़ सकता है. So we should take important steps to save water, like we should plant trees in rainy seasons so that they may get natural water. Water conservation system must be introduced, like it has been seen a lot of water is washed due to floods every year. And it is very important to make solid managements for floods. Government should build dams for this purpose, and dams will save water as well as prevent floods. और आप जानते हो जब डैम बनते हैं पानी सेव होता है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है. इसलिए it's very important to build dams in order to save water. Our industries drain the usable water containing toxic materials into the streams or other water bodies. And I want to one thing more, जो हमारे हॉस्पिटल्स का वेस्ट आता है, कितना पॉइजनस और कितना टॉक्सिक मटेरियल होता है, वह भी सारा इन्हीं रिवर्स में डंप किया जाता है. And you can think how harmful is this. It deteriorates the water and makes it useless for human consumption. It is truly a big loss. Then who is responsible for all these? We are responsible for all these. We should take necessary steps to avoid ill effects of all these. Now time has come. Think about all these. Now let's conclude the topic. The need of all is to understand the severity of problem of water scarcity. It is responsibility of every person to play his role for conservation of water. तभी हम पानी को बचा पाएंगे, तभी हम पानी को सेव कर पाएंगे. We should encourage family members, we should encourage our family members, children, friends, neighbors and co-workers to adopt different procedures for conservation of water. And the government and private sector need to work together for positive results. And it is also very important to create awareness among people, among public through print and electronic media. ये तभी possible होगा जब हम पूरे देश के लोगों के, इवन आई कैन से पूरे विश्व के लोगों को जागृत करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम पानी के बारे में, पानी की कमी के बारे में उन्हें जागृत करेंगे, तब जाकर हम ऐसी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे और उनसे ऊपर उठ पाएंगे. Every person should fully aware of importance of water conservation for his country and for whole world. And today a lot of people are struggling for fresh and water all over the world. कभी कभी आपने देखा होगा पानी के लिए लाइंस लगती हैं, पानी का टैंक आता है, लोग अपनी बकेट्स लेके, बॉटल्स लेके लाइंस में लगते हैं. कितना मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को सहन करना.
They are suffering and the condition can be worse in future. So in order to avoid any nasty condition in future, we should play our role by saving as much water as we can. Authorities should build a dumping mechanism to ensure that waste is not being dumped in the water. To sum it up, water is the foundation of life on the globe. And despite having a lot of water on earth, we are unable to use all of it without making it suitable. So, whatever amount of water reachable is required to be used carefully so that we will not have to face a situation of water scarcity. Water conservation is the key to prevent us from water scarcity. So this is all about water conservation. Once again, we revise the main points. How can we conserve water? हम पानी को बचाने के लिए क्या-क्या चीजें करेंगे? एक बार फिर से हम झट से पॉइंट्स में उनको रिवाइज करेंगे. Okay, let's get started. Number 1. While brushing your teeth, keep the tap closed. Prefer using a bathtub in place of a shower. Use a water pot to water the plants. Use buckets to clean lawns. And close the shower when applying soap. Use a sponge to clean your car. And use the water saving button on the toilet. Close the tap after drinking water. Teach your friends, your sisters, your brothers not to play with water too much. And take only the required amount of water in the glass to drink. Check regularly for the leaks and try to fix them on time. And one more thing, that is rain harvesting. Promise me that you are going to take this step positively. Rainwater harvesting is a water conservation technique to save water. And water used for washing vegetables and fruits should be used in watering the plants. So these are the main points one should kept in mind while using the water, and in this way we can save our water, we can conserve our water. Dear children, remember this quotation. A drop of water is worth more than a sack of gold to a thirsty man. Save water and it will save you. And one more quote for you. You never know the worth of water until the well runs dry. So dear children, this is all about water conservation. And I am sure you have understood this essay on water conservation. Have a nice day. Take care until we meet again. Till then, save water, save life. Thank you.